dynamic memory allocation for structures, and today we'll start with that only. First thing we need to understand that two library files, that is stdio and standard libs, are required for the structures. Then you define a structure named course here, and then inside that you declare integer marks, integer subjects with the 30 is the total width of that subject char variable. So you can have a subject name whose length can be up to 30 characters. Then you end the structures. You haven't defined it, so you have to redeclare it into your main loop. So inside a main loop, what you have to write is structure course, then assign a pointer called star ptr, and then give a semicolon. Now int I, number of records. So these are the two integers defined, I and number of records. Then you will ask user how many number of records he wants to enter using a printf statement. यहाँ पे क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे यूजर को printf यानी स्क्रीन पे दिखाई देता है. Then you do a scanf %d comma ampersand number of records. So you read how many records. Let's say user entered 5. So then 5 will be stored into a variable number of records. Now this particular way of writing is called camel case, जिसमें space हटा देते हैं. So number of records, ये number और of के बीच में space था जो हटाने के बाद उसके बाद next जो character आता है उसको capital करते हैं. सिमिलरली ऑफ और रिकॉर्ड्स के बीच का स्पेस हटा दिया तो जो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है आर उसको कैपिटल कर देते हैं. सो दिस इज अ वे वी राइट camel case variable names, and that is one of the standards nowadays. In many programming language it is used. Reason being, space is not accepted in many of the programming language and it is ignored in others. So that's why you use a camel case so that you know where should be the space added. Next is now how we will do a dynamic allocation. By this time we know there is MAL, so a clear and alloc and memory allocation. So we are just doing malloc. That means it is not writing 0 at that particular location points, and its size will be point equal to structure course star malloc number of records into size of structure course. Now this structure course is already defined at the beginning, and that's why the total size required by this structure will be allocated into the memory. Now we will see that for I going from 0, I less than number of records, I plus plus. Now some of the students directly defined int I inside this for loop, which is okay, but it's always preferred that you define it in the beginning so that you can use it at multiple places. Now enter name of the subjects and marks respectively /n. So every time it will keep on asking the marks and name of the subject. Then scanf %s for the subject name and %d for the marks. Now to store the %s, we always use pointers. So ptr plus I. This ptr was defined over here, and I is the memory location pointing to subject. So this is one of the ways where we use pointer to allocate to a subject. Similarly, ampersand, that is address of pointer plus I, is stored at particular marks location. So basically whatever number is taken, it's stored at ampersand. You just split over here. Then pointer plus I indicating to marks is where it is getting stored. Then displaying the information. Again, you can use a similar for loop. I going from 0 to number of records plus I, and this time %s/t. /t stands for give a tab between the two. So tab is generally 4 spaces. Remember this. Whenever we press a tab button, it actually generates 4 spaces consecutively. तो आप 4 बार space bar दबाओ या एक बार tab दबाओ, the result should be same. But when you press 4 times space bar, आपको backspace करते वक्त 4 बार करना पड़ेगा to come back to the original location. Whereas when you press tab, आप जब बैकस्पेस दबाओगे तो एक बैकस्पेस में ही 4 स्पेस से वो पीछे चला जाएगा. Then /n for new line. ptr plus I is pointing to subject and pti plus I pointing to marks. So basically
PTR is the pointer to the course. So instead of using course, we can directly use its pointer PTR and then return 0. So the output looks like this. Enter the number of records. Somebody has entered 2. Then it is asking enter the name of the subject. So programming subject marks 22. Enter the name of the subject again. Structure subject marks 33. And then display the information. Programming subject 22 marks. So here is the tab and structure subject 23 marks. Now we are going to learn something about file handling. So till this point, we know how to write a program and how to run it. But when you are doing it on a DOS or any other machine, you don't have way to save the files which are getting written. So we need some way by which we should able to store our programs. Nowadays, with the IDs like code blocks, in the beginning, it generates a file and stores everything into that file. So there is no need to use a file handling if you are using IDE such as code block. But in the olden days, when there was a DOS operating system, there was a immense need of storing a file, and that's why file handling facilities were provided in C programming. Similarly, even this particular C program can only store the programming file, that is C program, and not its output. So let's say example, you have generated a triangle which was displayed onto a screen, but it was never stored. So if you want to regenerate that triangle, you have to rerun the program. And that is not the most efficient way to do it. So once you run the code, you should able to store the outputs of the code as well. And that's another position where file handling comes into the play, and it is very important. Even when you are using code blocks, whatever values you entered and whomsoever name or scanf commands you gave, it was just temporarily there in the screen and it was there in the RAM, but it was never stored permanently onto a hard disk. And that's why file storage is needed. So when the program is terminated, the entire data associated with that program is lost. Storing the file will preserve the data even if your program is terminated. If you have entered large number of data, it will take lot of time to enter them all. However, if the file containing copy of that data, you can easily access the content of that file and with few commands in C. And that's why we can use a file handler. You can also move your data from one computer to another without making any change to the existing data. So let's see how to do a file handling. Firstly, there are two types of mainly of files what we are going to study here. First is text files where the text can be stored, and second is raw binary files where most of the numbers will be only zeros and ones. Now let us understand what is a text file. Most of us by default know .txt या फिर word file अगर कोई बनाते तो .doc are the extensions of the types of the text file. But in C programming, everything is txt. .txt short form of text. text का short form txt होता है. तो कभी कभी बच्चे by mistake स्टोर करते वक्त text लिख देते हैं, but make sure extension is always text. हम पढ़ते टेक्स्ट है पर वो एक्चुअली txt है सिर्फ. हाँ, so text files are normal .text files. You can easily create this text file using any simple text editor such as Notepad. आप विंडोज बटन दबा के अगर नोटपैड टाइप करोगे तो अपने आप ये नोटपैड प्रोग्राम चालू हो जाता है. When you open these files, you will see that it contains within the file a plain text. You can easily edit that text, delete that text or its content. They are minimum effort to maintain and easy to read, and they provide the least security and takes the biggest storage space. So these are the advantages of text files. Next is binary files. Binary files are mostly .bin files. Bin files हमको समझ में नहीं आते. When we open, they are just sequence of zeros and ones. So instead of storing a data as a plain text, binary forms files are stored as a zeros and ones. So they are not the ASCII values, and they can hold a large amount of data
they are not easily readable and that's why they provide a better security. तो आपको कुछ सिक्योर्ड डेटा बनाना है तो डॉट बिन फाइल जनरेट करते हैं, और अगर जनरल पर्पस डेटा बनाना है तो टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं. Now, what are the different file operations a C program can do for us? Let us try and understand, and that will be your today's first exercise. So we have to create a new file, open an existing file, closing an existing file, and reading and writing information from the file. So first thing is working with files. When we are working with files, we need to declare a pointer of that type of file. So this declaration can be seen in this type: file, then space, and then put a star, fptr semicolon. फाइल पॉइंटर के लिए fptr हम यूज करते हैं. जनरली आप सिंटैक्स कुछ भी दे सकते हो, पर जनरली हम फाइल के लिए फाइल पॉइंटर ही यूज करते हैं. So let's understand how we can create a file and edit it. First thing is opening the file can be performed using the instruction fopen, and which is defined in stdio.h, which is a standard header file for the C. The syntax for opening the file is standard IO, that is ptr equal to fopen, then double quotes file open, comma mode. Now these are the two what we call placeholders which user have to fill. For example, file to be open अगर यहाँ पे रखिए e drive program new program dot text, okay, तो वो पूरा पाथ ऐसे देते हैं. And then mode can be read, write, etc. So W stands for write. तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए, आप समझो आपके प्रोग्रामिंग में डबल स्लैश जो है वो कन्वर्ट होके सिंगल स्लैश की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह डबल स्लैश दिया हुआ है. बाय डिफॉल्ट इट इज इन ई ड्राइव सी प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर ओल्ड प्रोग्राम और न्यू प्रोग्राम, ये दो फाइल है. ओके, नाउ हियर there are two modes which are used. So let's suppose new program.txt file does not exist in locations E drive C program. The first function will create a file name called new program.txt and opens it for writing as per the mode W. Okay. The writing mode allows you to create and edit or overwrite the contents of the file. Now second line, let's suppose the second binary old program.bin exists at the location E drive C program. Then the second function opens the existing file in reading a binary mode. RB stands for reading a binary mode. Now let's understand ये modes कौन-कौन से हो सकते हैं. पहला होता है R. This is for open the file for reading. Okay. Duration of in existence of the file. If the file does not exist, fopen will return null to us during the read operation. Okay. Next is RB. RB is open the reading file into a binary mode. So वो 0101 में खोलेगी. Again, if the file does not exist, it will return us null. Third is W is equal to open for writing. If file exists, the contents will be overwritten, and if the file does not exist, the file will get created. Then WB. WB is writing in binary mode. So if file exists, the contents will be overwritten, and then if file does not exist, the content will get created. So R और W main operation याद रखो. B suffix जब लगता है, that is only for binary mode. Next is append. So it will append the data at the end of the file. तो पहले फाइल में लेट से निनाद लिखा है और मुझे उसका सरनेम महेंदले ऐड करना है, तो I can use this append command. This will not overwrite the file. If the file does not exist, it will get created, and if file it will get appended from 0. If file already exists, it will be appended after that particular last word. It does not overwrite the existing data. So you all must understand overwriting means first you delete the existing data and writing a new data at the same location. That is what we call overwrite. And आपने कभी कभी देखा होगा, देखो हार्ड डिस्क पूरा क्रैश हो जाने के बाद भी लोग उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट डेटा वाज नेवर ओवर रिटन. तो आपको ये सिचुएशन बहुत बार जिंदगी में फेस करनी पड़ेगी कि गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट फाइल,
make sure that you don't do any further operation on that hard disk if you want to recover that file, because if you try to copy paste or do some other operations on the same drive, there are likely chances that it will get physically overwrite on the hard disk and then you will never able to read it back. तो जब फाइल एक्चुअली डिलीट होती है कंप्यूटर से, तो बस उसकी एंट्री जो होती है उतनी डिलीट होती है, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशन पे वो फाइल रहती है। तो आप कभी भी देखो 2 GB की फाइल डिलीट करो या 5 KB की, टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि असल में सिर्फ उसकी एंट्री जो है वो फाइल कहाँ है वो एंट्री डिलीट हो जाती है लुकअप टेबल से, एक्चुअल फाइल उधर ही होती है। तो इसी तरह से जो आपका रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है वो फिजिकल फाइल देख लेता है कौन कौन सी है, एंड देन इट एबल्स टू रिटेन द फाइल बैक। तो आप उसके लिए ईज यूज करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो यूज कर सकते हो। इसमें आप दोनों चीजें कर सकते हो, जो ऑलरेडी डिलीटेड है फाइल उनको भी रिकवर कर सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका भी कुछ डेटा अगर डैमेज है तो उसको भी रिकवर कर सकते हो। इवन एज अ कंप्यूटर इंजीनियर दिस इज अ डेंजरस टूल, क्योंकि आप अगर आपका खुद का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करके भी किसी को दे दोगे, तो अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर जानता है इस फाइल रिकवरी ऑपरेशन के बारे में, so remember he can still access that data. Now how you will ensure then your existing data is not there at all in that file? There are two ways to do that. First way is you can defrag the entire hard memory. So during defragation it can write 0 0 0 0 और द सेकंड ऑपरेशन कुड बी, अगर आपका मेमोरी कार्ड 2 GB का है किसी को देना है, तो यू मेक श्योर दैट आप उस 2 GB में कोई और 2 GB की फाइल डालो, then you delete. That will ensure that your earlier data was overwritten perfectly. This will only happen if there are something which you don't want to share with your friends and also want to give your cards to them. So memory is a different, altogether different game. That's why we always ask people to keep on defragmenting. So defragment जो होता है, disk defragment, ये आपके विंडोज में एक ऑप्शन होता है जिससे आप पूरे फ्रैगमेंटेड फाइल्स को एक साथ ले आते हो, तो पूरा ऑपरेशन भी स्पीड अप हो जाता है कंप्यूटर का। If time permits, I will show you how to defrag the disk. Also, I will show you how to use T format to clean sweep the disk so that you are actually writing zeros, what we call full format. So there are two types of formats. One is quick format and second is full format. तो जो full format होता है उसमें वो पूरा मेमोरी पे 0 0 लिखता है, और जितना बड़ा मेमोरी उतना उसको ज्यादा टाइम लगता है। Next is AB is again similar to append, which is a binary append. And then R plus you can also write for both reading and writing operation. And if file does not exist, it will ask you to throw an error. Then that error will be again null. W plus is for both reading and writing. And again, file does not exist, it will be overwritten. If file exists, it will be overwritten, and if file does not exist, it will get created. Again, WB plus is for both reading and writing. तो आप मेन बात समझो कि ARW, ओके, सो बेसिकली हम उसको रॉ ऑपरेशन भी बोलते हैं, रीड, अपेंड एंड राइट। तो ये तीन ही मेन ऑपरेशन है, ये WB प्लस, RB प्लस या फिर इवन A प्लस इज फॉर बोथ रीडिंग एंड अपेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे बस दो दो साथ में आ जाती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्लस। पर मेन ऑपरेशन तीन ही होती है, रॉ, दैट इज रीड, अपेंड एंड राइट। नाउ हाउ यू विल क्लोज अ फाइल? क्लोज फाइल जैसे F ओपन से ओपन फाइल होती है, वैसे F क्लोज से क्लोज फाइल होती है। वी हैव टू जस्ट पॉइंट एट द पॉइंटर. So if F pointer is already assigned into your C program, you can use F close to close the existing file. Now reading or writing of a text file. So this is the program we are going to do. Similar to your printf and scanf, you can use F printf and F scanf to read and write from the file. Now they are just the file versions of printf and scanf, and the only difference that F printf and F scanf expect a pointer to the structure file. So let's take the first example. Write a text file. ठीक है, that will be your first program of the day. C drive तो हर एक के पीसी में होता ही है, तो इसलिए पाथ दिया है C drive program.txt और उसको write मोड में लिखना है. ओके,
यहाँ पे हमने क्या किया, stdi और स्टैंडर्ड लिब करके दो फंक्शन इंसर्ट किए। हम हमेशा 5 करते हैं, ये लोग 2 ही किए। देन इंट मेन, यहाँ पे void मेन भी लिख सकते हो, इंट नम f फाइल पॉइंटर है। तो ये बेसिकली ये लाइन हमेशा फाइल हैंडलिंग में रहेगी ही नहीं। जैसे हम इंक्लूड stdr डॉट h करते हैं उसी तरह फाइल स्पेस स्टार fptr ये लाइन हमेशा रहेगी। नेक्स्ट इज fptr इज इक्वल टू f ओपन सी ड्राइव, वो पूरा पाथ दिया है, पहले डबल कोट्स में, फिर कॉमा देके दूसरे डबल कोट्स में ऑपरेशन मेंशन किया है। हम पहली बार w ऑपरेशन करेंगे वेयर वी विल राइट इनटू द फाइल, और अगर फाइल पहले से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो यू हैव टू क्रिएट दैट फाइल, दैट इज व्हाट दिस w मींस। नाउ मैक ओएस और लिनक्स वाले पीसी पे ये प्रोग्राम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें सी ड्राइव होता नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होता है और उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस आपको लेना पड़ेगा। वो आपके होम में होता है, होम में शायद डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में होगा। उसके लिए आपको रूट फोल्डर में जाके होम को एक्सेस लेना होगा। तो दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद मैक एंड लिनक्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जो पाथ है वो फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके कॉपी पेस्ट कर लो। If the fptr is equal to null, then you print the error and exit one. Otherwise, print num error bracket में scanf %d ampersand num. Okay, fprintf pointer %d num and basically close fptr. So this program takes up a number from the user and stores it into the program.txt file. So enter num के आगे आपने लेट से 23 कहा, तो वो 23 num वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और फिर हमने fprintf से उस फाइल में प्रिंट कर दिया। जैसे हम स्क्रीन में प्रिंट करके देखते हैं वैसे fprintf से आपने उस फाइल के अंदर प्रिंट करके स्टोर कर दिया। उसका डेटा टाइप मेंशन किया %d, वेरिएबल कौन सा स्टोर किया है वो मेंशन किया, और वो कौन सी फाइल में स्टोर करना है वो आपको fptr से पता चल गया। देन क्लोज fptr, ये कमांड भूलना मत, ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ता है फाइल। ये दो इंपॉर्टेंट कमांड है, एंड देन यू रिटर्न 0 so that it's the end of the program. So after compiling and running this program, you can see a file program.txt getting created into your C drive, and when you open the file you can see the integer that you have entered. Now second program is reading from that particular file. So this is the last slide of the day, and then we will perform these two experiments. So हम रीडिंग कैसे करेंगे फाइल में, पहले दो लाइन एग्जैक्टली सेम है, मेन इंट नम फाइल पॉइंटर, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे अभी नेक्स्ट कमांड है इफ फाइल पॉइंटर इक्वल टू दिस कॉमा आर, अगर नल आता है तो सीधा एरर थ्रो करो, एरर ओपनिंग फाइल एंड टेक एग्जिट। इफ नॉट देन scanf fptr %d कॉमा एम्परसैंड नम, तो सीधा fscanf से, जैसे हम रेगुलरली यूजर से एंटर करते हैं इनपुट, वो सिर्फ scanf से लेता है, पर अभी हम फाइल से रीड करना चाहते हैं तो fscanf यूज किया। फाइल पॉइंटर से एक इंटीजर जो %d मतलब int फॉर्मेट में स्टोर्ड है उसको num में रीड कर लिया। देन printf value of n was, and then you display that value and return 0. So this program will read the integer from the program.txt file and prints it onto the screen. If you are successful in created this example in first example, then whatever integer you have entered should reach back to you. So this is where I will stop today's lecture and continue in the next one. And if you have any doubts, you can ask.